and as I've told you, it has 4 chapters. First one is electricity. आप मुझे बताएं कि चार्ज किसे कहते हैं? Sorry, what? Define charge. Charge? Like, Yes. Do you have any concept of charge in your mind? I know what like charges are, like in a battery or something like that. Just electricity in the current, like समझाए थे. Yes. जितना भी आपको पता है आप मुझे बताएं कि चार्ज का Okay. concept क्या है आपके दिमाग में? मैं आपको चार्ज का मतलब बताऊं? नहीं, मतलब नहीं बताओ, बस ये बताओ कि चार्ज किसे कहते हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या है इसके बारे में? जब आप सुनते हैं चार्ज तो आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट इसका है? Well, charge is like usually whenever I like think about the word charge, मुझे usually साइंस आते हैं दिमाग के अंदर, like the प्लस एंड माइनस का चार्ज होता है या like किसी चीज का चार्ज होता है. आपने अभी करंट के बारे में बात भी की ना, बैटरी, या तो उससे रिलेटेड कुछ बात करो. I don't know. Charge is anything that has electric field around it. मतलब ये Okay, particle yes. that has electric field around it is called charge particle. ठीक है, जो आपने कहा वो कुछ गलत नहीं है, जो कुछ आपने बोला वो बिल्कुल ठीक है. ठीक है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, which means you are talking about polarity. It is the property of charge that it will be polar. It will either be positive or negative. ठीक है, ये आपने सही. और दूसरी बात जो आपने की कि चार्ज इज एनीथिंग विच इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, या किसी सर्किट की बात करते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वर्किंग फिनोमेना के बारे में बात करते हैं, तो भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कुछ गलत नहीं. ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत जनरल सी एक डेफिनेशन देना चाहो चार्ज की, तो वो ये होगी कि चार्ज इज अ पार्टिकल दैट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. ठीक है. Okay. अब फील्ड किसे कहते हैं? फील्ड का मतलब होता है रीजन. जब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैग्नेट का पता है आपको? किसका? मैग्नेट. Yes, of course. और कभी यूज भी किया होगा, खेला भी होगा यकीनन उससे. Yes, yes. ठीक है, अगर आप मैग्नेट के करीब एक आयरन नेल रखते हैं तो क्या होगा? Attraction होती है because iron is ठीक है, a अच्छा, आप magnet. आयरन नेल को दूर करते जाएं तो वो फोर्स वीकर होती जाएगी, जी. और एक वक्त आएगा कि आयरन नेल पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी, विच मीन्स आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होगी. जैसे जैसे आप आयरन को नेल के मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं तो फोर्स फील होती है ज़्यादा, और जैसे जैसे मैग्नेट से दूर करते जाओगे तो फोर्स वीकर होती जाएगी. ये बात क्लियर है आपको? जी. तो एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड. ठीक है, तो आयरन नेल पर मैग्नेटिक फोर्स तब तक एक्ट करती है जब तक आयरन नेल मैग्नेटिक फील्ड में हो. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड देखी नहीं जा सकती, उसको फील किया जा सकता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ यू हैव आयरन नेल इन वन हैंड एंड द मैग्नेट इन द अदर हैंड, तो आपके पास जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ेगी बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट एंड द आयरन नेल, आपको वो फोर्स वीक होते हुए फील होगी, और एक वक्त आएगा कि वो फोर्स खत्म हो जाएगी. यस. क्लियर है बात? जी. इसी तरह से चार्जेस के अराउंड एक फील्ड होती है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हम इस वक्त मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. इसी तरह से एक फील्ड और होती है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. जैसे कि इस वक्त अर्थ हम पर फोर्स लगा रहा है बिकॉज वी आर इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मून पर होता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एक्ट करती है, या जिस प्लैनेट पर होगा उसके हिसाब से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट स्पेसिफिक प्लैनेट. ठीक है. यस. अब मुझे बताओ चार्ज किसे कहते हैं? Charge particle that has an electric field around it. An electric field is the region around a charge where its force can be experienced. You can relate it with the magnet, right? Yes. ठीक है. Electric field is the region around charged particle where you can experience the electric force of the charged particle. अब now there are two types of charged particles. दो तरह के charged particles होते हैं. कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव.
और इन दो चार्ज पार्टिकल्स की एग्जांपल्स आपके पास हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. Yeah. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. ठीक है. Yes. अब चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है. डू यू नो व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज आर? Yeah, like their properties as a फिजिकल like their प्रॉपर्टी, characteristics. फिजिकल क्वांटिटी ऐसे, मतलब इस क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास दो चीजें हो, यूनिट हो और मैग्नीट्यूड हो. जी. फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिनके पास टू प्रॉपर्टीज हो, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. ठीक है. can you please repeat that? Charge is a physical quantity. Physical quantities are the quantities that have unit and magnitude. For example, if I talk about your age, so you will say, let's say 14 years or 15 years. So इसमें 15 क्या है, magnitude है, years क्या है, unit है. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं height of a table for example, और आप लिखते हैं उसमें 2 meters, ठीक है, तो 2 Yeah. magnitude and meter is unit. ठीक है. तो हर वो Yeah. चीज जिसमें यूनिट और मैग्नीट्यूड हो, आप उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है. तो चार्ज भी फिजिकल क्वांटिटी है, विच मीन्स के इसको आप मेजर कर सकते हैं, विच मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एंड इट हैज यूनिट एज वेल. और उसका यूनिट होता है कूलम्स. उसका यूनिट क्या होता है? कूलम्स होता है, कूलम्स. Okay. सुना है कभी? ये लिखा हुआ है. Yes. Okay. Cool. एंड सी इज द सिंबल, कैपिटल सी फॉर कूलम. जैसे कि आप टाइम के लिए सेकंड लिखते हो ना, Yes. और सेकंड का सिंबल एस लिख देते हो. इसी तरह Yes. से किलोग्राम रिप्रेजेंट्स केजी रिप्रेजेंट्स किलोग्राम, एम रिप्रेजेंट्स मीटर. ठीक है. तो Yes. सी रिप्रेजेंट्स कूलम एंड कूलम इज द एस आई यूनिट फॉर चार्ज, बिकॉज चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका एस आई यूनिट है कूलम्स. क्लियर है यहाँ तक? Yes. ओके. इलेक्ट्रॉन and proton both are charged particles. Electron has minus 1.6 exponent minus 19 coulombs charge. Proton has positive 1.6 exponent minus 19 coulomb charge. ठीक है. Okay. Yes. Which means कि they have the charge of same magnitude. नंबर देखें आप, सेम है दोनों का ना, 1.6 exponent minus 19, और इसका Yes. नंबर भी है 1.6 exponent minus 19, लेकिन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है. और ये बात आपने अभी की शुरू में कि चार्ज पार्टिकल्स पोलर होते हैं. मतलब आपने कहा था, मैं जब चार्ज के बारे में सोचती हूँ तो मुझे दिमाग में नेगेटिव और पॉजिटिव और जी. इलेक्ट्रिक साउंड करता है. So negative represents electron and positive represents proton, or you can say negative represents negative charge, positive represents positive charge. ठीक है. Positive. Yes. अच्छा, किसी भी सब्सटेंस का एटम अगर हम बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, तो इट हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है. इसी तरह से कार्बन में 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सही है. Yes. इसी तरह से अगर ऑक्सीजन की बात करें, 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स. नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स. आप किसी भी एलिमेंट के एटम के बारे में बात करोगे, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें ही उतने ही Protons होते प्रोटॉन. हैं. ठीक है. तो नेट चार्ज हर सब्सटेंस का जो है ना वो जीरो होता है. मतलब हाइड्रोजन न्यूट्रल है, कार्बन न्यूट्रल है, ऑक्सीजन न्यूट्रल है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है. ये बात समझ आ रही है? Yes. कोई भी सब्सटेंस चार्ज कब करता है? चार्ज कब होता है? जब या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. ठीक है. अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज कंपेयर टू बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. Yes. Okay. और सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे. Can you repeat that? अगर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, Yes. तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो इफ अ सब्सटेंस इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, it has more number of electrons than protons, right? So it is more Yes. negative than positive. So it is negatively charged overall. Got it? Yes. Similarly, if a substance loses electron,
So it has more positive charges than negative charges. That's why we will call it a positively charged substance. ये ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात? इसको पूरा रीड करें, जरा Yeah. लिखें आखिर तक देखो क्या लिखा हुआ। Total पूरा charge that the formula you just wrote. Everything on this slide from the beginning, from this charge. Okay. So should I read it or like do I read it to myself? Don't read aloud. Okay. Just Okay. read and ask if you have any question. I'll talk about this at the end. अच्छा, ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, ठीक है? जब आपकी ये रिकॉर्डिंग एंड हो जाती है, मींस क्लास एंड हो जाती है, तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप लिंक भेज दूंगा। जैसे Yeah. Okay. ये आपको मिल गई थी, मैंने पढ़ लिया। पढ़ लिया? इसमें कुछ पूछना है आपने? जी। ये जो आपने वैल्यू लिखी है 1.6 ये याद नहीं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की, ये यूज कब होती है? लाइक डज इट हैव अ यूज एनी फार्मूला के अंदर? यहाँ पर इसका यूज है, लेकिन ये आपने याद नहीं करनी। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा, ये एग्जामिनर आपको खुद बता देगा। ओके। इस वक्त जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन have the charges that are negative and positive for the magnitude of charge is same. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन is more stronger charged particle than proton. They are equally stronger, but the polarity is different. Yeah. Okay. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप बोलेंगे प्रोटॉन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एंड वाइस वर्सा। जी। मैंने पढ़ लिया है। ओके, अब जो आखिर में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है Q equals to NE. What is Q? What is N? Number of electrons. What is E? Charge of electrons. Which is 1.6 into 10 to the power of minus 19 C. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो या प्रोटॉन का चार्ज हो, वैल्यू यही होती है। ठीक है, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 सीरीज। ठीक है, अब इसका यूज क्या है जो आपने पूछा मुझसे। अब एक क्वेश्चन है, इसको देखें। ठीक है, क्वेश्चन रीड करें। Calculate number of electrons in one coulomb charge. Okay, what is unknown? Number of electrons. Okay, फॉर्मूला क्या था? Q is equal to NE. Yes. N को सब्जेक्ट बनाएं। Yes. How much is Q in the question? 1. Very good. And how much is E? 1.6 into 10 to the power 9 minus 19. Do you have calculator with you? Not at the moment. Sorry, I have it in my bag. Okay, go bring it. Should I get it? Yes. Yes. Okay. Okay. ओके, फ्रैक्शन का बटन आपको कैलकुलेटर यूज करना आता है ना? Yes. फ्रैक्शन का बटन आप प्रेस करोगे, 1 ऊपर लिखोगी, डिनोमिनेटर में आपने लिखना है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस। Is the answer 6.25 into 10 to the power 18? Yes. Is this a smaller? Is there a small magnitude or a big, very big magnitude? Exponent 18. It's a big magnitude. Yes. Exponent 18 का मतलब क्या होता है? कितने zeros हैं आखिर में? मतलब कितने 18. 18 decimal place में। Which means कि एक कूलम चार्ज किसी भी जगह पर क्रिएट करने के लिए you have to have 6.25 exponent 18 number of electrons at that point to create 1 coulomb charge. सही है? Yes. किसी भी एक पॉइंट पर अगर आपने 1 कूलम चार्ज क्रिएट करना है तो आपको उस पॉइंट पर 6.25 एक्सपोनेंट 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना होगा, जमा करना होगा to create 1 coulomb charge, which means charge of a single electron is of very insignificant magnitude because it is exponent minus 19. जी। ओके, इसी क्वेश्चन को आप प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू भी कर सकते हैं। Do you know how proportionalities are applied? Cross multiplication. Yes, cross multiplication.
One electron has this charge. How many electrons will create 1 coulomb charge? So cross multiply and find out the answer. It will give the same answer though, right? Yes, yes. Yes. So you have two options. Either you use Q is equal to any, or you use this proportionality, cross multiplication. Yes, okay. ओके, मुझे कोई अगर आप ये बताएं कि हर सब्सटेंस के जो हर एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं. Oh, न्यूट्रल का क्या neutral, मतलब? like atoms, neutral? यस, एटम्स. क्या एटम्स न्यूट्रल होते हैं? I don't think so, no. दे आर न्यूट्रल. They are? अभी तो बता. यस. Oh. मैंने कहा था हर सब्सटेंस के जो एटम्स है ना वो न्यूट्रल होते हैं बाय Oh, नेचर, yeah. क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं. Oh, yes, yes. Sorry. कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एटम चार्ज पता है कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे, या gain फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो कौन सा चार्ज आता है? positive charge, वेरी गुड. और अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो? negative charge. और इस मेथड को कहते हैं चार्जिंग. Yes, charging. If you are charging a substance, it means that you are either adding electrons to the substance or removing electrons from the substance. Yes. बात समझ आ रही है ना? So when you are charging a substance, you are actually disturbing the equality between electrons and protons in the substance. Yes. Okay. So there are three methods of charging. सबसे पहला मेथड जो है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. डू यू नो व्हाट फ्रिक्शन इज? Yes, when two objects like create. Okay. Yeah, okay. I I know know what that it means. you have the concept. Yes, okay. Friction is a force. Yeah. Friction is a force that produces heat, Yes. and friction is a force that opposes motion. Yes. Okay. So friction is a force that oppose motion and produce heat. So when you rub two substances together, charging by friction is for insulators. Do you know what insulators are? Insulators? Yes. Yeah. Tell me. Sorry, what? What are insulators? They're like they're oh my god, where like Can you name electrons any like do insulator? not move Can you name? freely. They're like tightly bound together. Like this is the stuff I remember. Okay, can you name any insulator? Or insulator? Yes. Like electrical insulator, right? Any insulator, electrical or thermal or whatsoever. Okay. Rubber. Rubber is an electrical insulator. Why is rubber an electrical insulator? Because it does not allow electrons to move. Yeah. Okay, that's why rubber is an insulator. So we call insulators the substances in which electrons cannot move, or you can say they do not have free electrons in them. Yes. Okay, so charging by friction is for insulators. Okay, so you can charge insulators by friction. Okay, so yeah, let's say when two different insulators are rubbed together, heat is produced because of friction, right? Yes. This heat is gained by electrons of one of the two substances, and these electrons then, after gaining heat, are energetic enough to break their bonds and get deposited onto other substance. So substance that gains electron will be negatively charged, and the substance that loses electron will be positively charged. Got it? Yes. For example, a glass rod, read it, is rubbed with? It's rubbed with silk cloth, and after being rubbed, both get charged.
glass rod loses electrons and hence it is positively charged. Silk cloth has gained electrons and hence it is negatively charged. Yes. Charge on both is? Charge on both is equal but opposite. After They are separated. after they are separated, they attract each other. Because they have unlike charges, that's why after they are charged, you will see that they will be attracting each other. And the charge on both is equal but opposite. It means कि अगर silk cloth negatively charged है, -5 charges silk cloth पे है, तो फिर glass rod पे +5 charges होंगे. मतलब जिसके पास When you wrote over there, charge on both is equal but opposite. What do you mean? यही तो बता रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि अगर silk cloth पर -5 charges हैं, तो glass rod पर +5 charges होंगे, which means magnitude of charge same होगा, polarity is opposite. Okay. क्योंकि देखो अगर सिल्क क्लॉथ ने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो फिर ग्लास रॉड ने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए ना, इसका मतलब ये है. Yeah. तो ग्लास रॉड पर अगर -5 चार्ज है तो सिल्क क्लॉथ पर +5 चार्ज होगा क्योंकि उसने 5 लूज किए हैं, उसने 5 गेन किए हैं. Yes. क्लियर है यहाँ तक? Yeah, तो क्लियर है. ओके. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल. ठीक है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा. The second method is charging by induction, and this method is to charge conductors, and you know that the conductors are substances that have free electrons in them. Okay, so there is a negatively charged rod in front of a metal sphere which is supported on insulated stand. Okay. Negatively charged rod electrons को इस sphere के repel करेगी. Yes. और इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस से सेपरेट कर दिए, अलग कर दिया. इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने पॉजिटिव चार्जेस से दूर हो जाएंगे. ठीक है. Yes. देन आपने जो राइट साइड है स्फीयर की ऑपोजिट साइड, उसको अर्थ वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर दिया. ठीक है. Yes, okay. Earth wire is a copper wire, which means it is a conductor, and it is providing alternate path for the electrons of the sphere to move to the earth. Yes. So electrons of sphere, because of repulsion of the negative charges on the rod, will be moved to the earth. So when the earth wire is removed, sphere has lost some electrons to the earth, right? Yes. So sphere is positively charged because it has less number of negative. So it charges, in yes. the second diagram, the positive are like on one side, but in the third one they're like spread around. Because we have removed the negatively charged rod from. Yeah, okay. So इनिशियली वो अट्रैक्ट कर रहे थे ना नेगेटिव चार्जेस से. अब रॉड आपने हटा दिए तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा. सो दे विल बी इवनली स्प्रेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द मेटल स्फीयर. ओके. वो एक तरफ फिर कलेक्ट नहीं होंगे. एक तरफ कलेक्ट होना एक्चुअली ये शो कर रहा है कि दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, बट पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव, दैट्स व्हाई दे विल बी स्प्रेड आउट. ओके. ओके. अच्छा जी. स्फीयर पे चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, गेन किए? लूज किए. ओके. और लूज क्यों किए? क्योंकि रॉड पर चार्ज क्या था? नेगेटिव. और नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल करके अर्थ में भेज दिया. ठीक है. यस. ओके. अच्छा, इस प्रोसेस को कहते हैं अर्थिंग. अब इसके बारे में मजीद बताता हूँ आपको अर्थिंग के लिए, लेकिन उससे पहले आप पहले समझो कि अगर ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज होती, अभी तो नेगेटिव चार्ज थी ना, अगर रॉड पर चार्ज पॉजिटिव होता तो स्फीयर पर यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? लेफ्ट पर नेगेटिव और राइट पर पॉजिटिव. ओके. फिर अगर अर्थ वायर आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव वाले चार्जेस लाइक अर्थ वायर के पास लाइक ड्रॉप हो जाएंगे, वो अर्थ में चले जाएंगे. यस. और नेगेटिव ऐसा कभी भी नहीं होता. ठीक है, ये कभी भी नहीं लिखना है जो आप अभी बोल रही हो. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज का मतलब है प्रोटॉन. ठीक है. या. और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है.
प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता। So तो फिर वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या रखा? वो इस अर्थ वायर के थ्रू अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे स्फीयर में। बात समझ आई? Yes, yes. कभी भी आप ये नहीं लिख सकते कि पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन मूव, ठीक है? Okay. Because proton is inside nucleus, if you are talking about movement of proton, you are actually talking about uh, substance being broken. Okay. बात समझ आ रही है आपको? इलेक्ट्रॉन्स Yeah. ऑर्बिट में होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन की मूवमेंट का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट द सब्सटेंस बीइंग ब्रोकन। मतलब आप ये एक तरह से बोल रहे हो कि एटम टूट गया, न्यूक्लियस अलग हो गया, इस तरह की बात कर रहे हो, ठीक है? Okay. Yes. तो हमेशा होगा क्या, या तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉन्स गए थे, स्फीयर से अर्थ में गए थे, स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था। इस केस में स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। Yes. तो स्फीयर को इलेक्ट्रॉन्स अगर स्फीयर ने गेन किए तो स्फीयर पे चार्ज कौन सा होगा आफ्टर अर्थ वायर इज रिमूव्ड? Minus. नेगेटिव होगा, क्योंकि इट हैज मोर नेगेटिव चार्जेस Yeah. देन। Sorry. Negative. माइनस कह सकते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन Oh. Okay. टर्मिनोलॉजी बट अब तुम्हें टाइम लगेगा क्योंकि अभी तुमने पहली मरतबा फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, तो मसला नहीं है, मतलब इसको गलत कंसिडर नहीं किया जा सकता। I mean, I write it as negative, but when I say it, it just comes out as minus. यस, इट्स ओके। मैंने कहा ना अभी आपको यूज टू होना है टर्मिनोलॉजीज के साथ, वो टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप उसकी टर्मिनोलॉजीज को खुद ब खुद करेक्ट करते Yeah. जाएंगे, ठीक है? अब ये पूरा एक दफा रीड करो, उसमें समझ आ रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? Yes. समझ आ रहा है. नेक्स्ट पे चलें फिर? Just a second. I just want to read it once. ओके ओके। Yes. Okay. Next पे जा सकते हैं. कोई क्वेश्चन? नहीं. ओके। कितने स्फीयर्स हैं अब ये? 2. एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, ठीक है? Yes. ए पर लेफ्ट पर पॉजिटिव, राइट पर नेगेटिव है, और बी पर लेफ्ट पर पॉजिटिव, राइट पर नेगेटिव। Negative. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं. अच्छा, ए के नेगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड बाय बी के पॉजिटिव चार्जेस, राइट? Yes. And since they are in contact, so the negative charges of A will move to B. Yes. ठीक है? मैं ये लिख सकता हूँ A has lost electrons, B has gained electrons. Yeah, you can write that. So A is positively charged, B is negatively charged. Okay? Yes. And when they are separated, positive charge भी spread कर जाएगा because like charges repel. Negative charges spread कर जाएगा because like charges repel. ठीक है? Electrons Yeah. from A are transferred to B. Yes, they're transferred. इस पूरे में अगर कुछ पूछना है एक दफा रीड कर लें। Yeah. Yeah, okay, पढ़ लिया. Yes, Iman. This sphere is positively charged, right? Yes. क्या मतलब है इस बात? That has lost electrons. Very good. Now I have connected it with the earth wire. What will happen? The negative. बोलो, कोई मसला नहीं है, देखो अपनी टर्मिनोलॉजीज का मसला नहीं, मतलब बोलते जाओ बस, टेंशन ना लो। Like the earth, they're being attracted between कौन the अट्रैक्ट earth. हो?
कौन अट्रैक्ट हो रहा है? Sorry, what? कौन अट्रैक्ट हो रहा है? Which particle is attracted? Are protons attracted by the negative charges of the earth, or you will say that the The negative negative charges charges are attracted. very good. The negative charges from the earth will move to the sphere, right? Yes. And after the sphere gains the negative charges, the sphere will be neutralized. Yes. Okay. Neutral का मतलब क्या होता है? किसका? Neutral का मतलब क्या होता है? What is meant by neutral? That means it has the same amount of protons and electrons. Very good. No net charge, or you can say same amount of positive and negative charges. This is called neutral. So after gaining electrons, the sphere will be neutralized, Negative. right? Yes. Now this is a sphere which is negatively charged. I'm connecting it with the earth. What will happen? The positive electrons are There are no attracted. electrons that are positive. Sorry, what? There are no electrons that are positive. Yeah. So. Negative charges of the sphere will move to the earth. मैंने हमेशा आपको बताया move हमेशा electrons करते हैं. So इस case में Oh, electrons okay. move to the Yeah. earth. Sorry, I forgot that. Protons never move. Means proton. So in this case, electrons of the sphere will move to the earth, and the sphere will be neutralized after losing these electrons which were in excess. Yes. Okay. This is actually the definition of earthing. Read it. Yeah. Process by which a charged metal is neutralized when it is connected to earth by metal wire. Yeah. Okay. Okay, so earthing is the process by which you neutralize a charged metal sphere by connecting it with the earth. So if it is negatively charged, it will lose electrons to the earth. If it is positively charged, it will gain electrons from the earth, but the final outcome will be the same. It will be neutralized. Yes. Okay. Okay, so this was the second process of charging. Now we are moving on to the third one, charging by conduction. Okay. Charging by conduction. Yes. There are two spheres. A positively charged sphere is C, and a negatively charged sphere is U. Okay. So because of C, U will have induced charges, which means negative charges on the left hand side and positive charges on the right hand side because of the force of attraction these charges on sphere C. Yes. Okay. So, Yeah. so the negative charges at the facing end will be attracted by the positive charges of sphere C, right? Can you repeat that? The negative charges of sphere U are attracted by the positive charges of sphere C. Yes. So U will move towards C. Yeah. Okay. As U move towards C and U touches C, electrons of U will Wait, be why can't C move to you? because C has more charge as compared to U. Okay. Okay. So U will move towards C, Yes. Okay. and when U touches C, the electrons of U will be transferred to C, right? Yes. Let's say there are two electrons of U that are gained by C. So out of 5 positive charges, 2 will be neutralized Yeah. Okay. after gaining 2 electrons from U. Okay. Yes. So C will be left with 3 positive charges, right? Yes. Okay. Yeah. And U has lost 2 electrons to C, so you will have 2 positive charges. Yeah. Okay, so both are positively charged Yes. and they will repel each other after being charged. Yeah. Okay. Okay, so if you compare charging by induction with charging by conduction, there is a difference that charge on the charging specimen is decreasing in conduction.
right? Okay. Yes. But in induction, the charge on the charging rod was the same. Yes. Yeah. See, Yeah. It was same. it does not lose or gain electrons. Yes. But in conduction, the charging specimen will lose or gain the charge particles. Okay. Yeah. In induction, you would have noticed that negative charge, if the rod is negatively charged, the sphere was positively charged. Yes. And in this case, the sphere is positively charged, the other one is also positively charged. Positively charged. Yes. Okay, so there are some differences in induction. There was no physical contact between the charging rod and the substance it was charged, right? Yeah. But it is shown Oh, that in U the touches conduction. Yes. there is a physical contact. In conduction, we do not use earthing, but in induction, we did use earthing. Okay. Yeah. Okay, so these were some differences. Now, electric field. What was electric field? I told you in the beginning. Yes. The region around the charged particle where its electric force can be felt. And electric field line is the path. Path taken by positive charged particle when placed freely in electric field. Okay, so for positive, we draw lines pointing outwards. For negative, we draw lines pointing inwards. Pointing inwards. Yes. And for positive and negative charges both, the field lines will be from positive to negative. Yes. There are two like charges. The field lines will be in a way that they are repelling each other. They are not trying to be like, combine and Okay. make up, Yes. right? So when there are unlike charges, the field lines will merge and will meet up and will form a uniform pattern. But if the They're charge, repelling each other, so they yes. won't join. So you have to identify these, or there will be some questions in which you have to draw these as well. Yes. And if they ask you what is this arrow representing in this, so you will write the arrow in the electric field line is representing the direction Positive. of some positive charge. Yeah. Okay. Now there are some applications which is just a reading material for you. So I'll share this with you. You have to read this. You will pause the video and you will read it. Okay. Yes. Okay. Making it part of the lecture so that you know what you have to write. These are some applications and hazards of static electricity. Now moving on to some Okay. questions. We know how much you have learned in this chapter. Read the question and answer, please. Okay. The base of a cloud is negatively charged. The cloud is over metal mass as shown. Which row describes the charge induced at the top of the mass and how it is reduced? Uh, Charge at the top of the mass, negative. Um, This is is the negatively on is the answer D? answer is C. Not C, D. Yeah. Is that the answer or is the answer C? D is incorrect because it's written protons moving. Oh, okay, yeah. And protons don't move. Next question. A metal plate X is attached to Earth by a battery. The plate has a positive charge. A second metal plate Y is initially uncharged and connected to Earth.
This plate is positioned parallel to X. So what's the answer? Yeah, I was just reading the MCQs. Is the answer B? Yes. Yes? Yes, electrons flow to Y. Why? Yeah. The diagram shows a metal lightning conductor attached to a building. Why is the lightning conductor made out of copper? Is the answer C? Or or A? Yeah, sorry, A. I was gonna say A, then I changed my mind to C. Why is the lightning conductor made of copper? Copper is a conductor, so it will allow movement of charges. Now it's written positive charge, right? So it is not written protons, right? So when we are talking Yeah. about positive charges, it means that a charge which is opposite to negative. It is not talking about proton actually. Okay. Well, can you show the previous MCQ once more? Sorry, I just wanted to see it again. Yeah, okay. Continue. Two instantly uncharged metal spheres X and Y are touching. Positively positively charged rod is near X and then spheres move apart. Why? What is the charge on Y? The answer is C. Oh, yeah, I guess. No, wait, no, wait. Then what's the answer then finally? It's A, I think. Yeah, it's D. If it is positively charged, negative charges on the left hand side of X, Yeah, positive is here, negative, positive. So negative yeah. charges of sphere Y will move to X. So X will be negatively charged, Y will be positively charged. So, but X is gonna be negative, right? The question was for Y. Oh, yeah, yeah. And the charge will be same, not smaller. Okay. अगर y इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है x को तो जितने इलेक्ट्रॉन्स x गेन करेगा y ने उतने ही लूज किए होंगे ना तो चार्ज तो दोनों पर मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम होगा पोलैरिटी ऑपोजिट होगी व्हिच मींस Okay. अगर x पर 3 नेगेटिव हैं तो y पर 3 पॉजिटिव होंगे ना होंगे दोनों पे 3 3 Yes. लेकिन एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव तो मैग्नीट्यूड सेम होगा आप स्मॉलर और ग्रेटर नहीं लिख सकते Okay. Stationary negative charge in an electric field experiences an electric force in the direction shown. What is the direction of the electric field? I don't get this question. Stationary negative इलेक्ट्रॉन charge. A stationary negative charge in electric field experiences electric force in the direction shown. So negative charge is feeling a force towards right, right?
Yes. So this side is anode, which means you can say positively charged electrode, Yes. and this side is cathode. Negative. A cathode. Yes. So electric field will be from anode to cathode, Okay. which means Yes. left or towards right. To left. Yes, So the answer is A. Yeah. answer is A. Uh, yeah. Okay. Metal lining conductor is placed at the top of a building. The conductor is connected to earth. When a charged cloud passes over the top of the metal, lightning conductor becomes positively charged. What happens to the lightning conductor to produce a positive charge iron star? Is the answer B? Yes, Yes? because protons cannot move. Yeah. Metal sphere is connected to Earth. A positively charged approaches the sphere and stops before touching it. What is the movement of the charge on the sphere and what is its final charge on the sphere? Uh, the answer is B. A. Hmm. It is Why isn't connected it to the earth. neutral? रॉड रिमूव किए उन्होंने या नहीं किए? Yeah, they stopped it before touching it. So electrons from the earth will travel to the sphere, right? So sphere will have Yeah. more negative charges than positive charges. So sphere will be negatively charged, and the movement Yeah. actually of electrons from the earth to the sphere. Okay. Yeah. ओके, Yeah. ये न्यूट्रल कब होता है? जब अगर आप लिखा होता कि रॉड आपने हटा दिया, which means rod is removed and the sphere is still connected with the earth by using earth wire, then it will be neutral. Okay. और उस केस में फिर ये होगा electrons from the sphere will flow back to the earth. ठीक है, Yes. Okay. क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जिसने गेन किए थे वो वापस जाएंगे तो स्फीयर न्यूट्रल होगा. Yes. Okay. Positively charged rod is brought near an isolated uncharged conducting sphere. What are the charges on X and Y of the sphere? Is the answer A? ऐसा कैसे हो सकता है? एक्स पर भी वही चार्ज हो जो वाई पर हो. But like, it's not saying if it's like attracting or repelling, or there is no If the information rod about. is positively charged, it will Yeah. attract electrons. Sorry, what? If the rod is positively charged, it will attract electrons to the sphere. On the left hand side there will be, Negative. and on the right hand side Positive. there will be those protons or positive charges that have lost these electrons to the left.
Yeah. So the answer is Okay. देखो ये मैंने बता रहा हूँ कि कहाँ से हमने सीखा था। Yeah, I got the positive and negative part. So The question said that, wait. Yeah. So the rod is positively charged, but how would we know, like, how can I explain this? take your time, collect the words. The question isn't talking about any attracting or repelling. So how would we know if they are Why should the negative question and talk about positive? attraction and repulsion? If there is a positive, How would we know, like, if they are negative and positive in this? That's fair. everything has negative and positive charges. Are you not made up of atoms? Everything's made up of atoms. So if everything is made up of atom, it will consist of electrons and protons, right? Yeah. So Okay. it is not to be That written. was my confusion. Never mind. Yeah. So if it's written that is fair, which is neutral, it means it has positive and negative charges, but they are equal in number. Okay. Okay. So when it's written that it is negatively charged, it does not mean that it is not having any other charged particles than the charged particles that are in excess. Okay. Okay. Yes. When it is neutral, it means it has the same number of positive and negative charges it should have naturally. Yes. Okay. Got it? Yes. Okay, next. One more question, then I'll leave. Okay. The diagram shows an uncharged ball coated with metallic paint. The ball is suspended from an insulating thread and is placed near a positively charged rod. Which diagram shows the charge distribution of the ball? Is it going to be D? Yes, very good. D, right? और डी करेक्ट करने का मतलब है आपको ये चीज समझ आ गई है, ठीक है? Yeah. ठीक है, तो क्योंकि डी में सेम कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है दोबारा जो आपने Yeah. पहले किया था। तो अच्छा, अब इस मुझे बताओ कि अच्छा ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तुम्हारा पहला, ठीक है? व्हिच मींस आप अच्छे पेस पे हैं, ठीक है? Okay. अच्छा, तो अब आपने Great. एक काम ये करना है कि मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, जब आपके पास वैसे शायद इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग पहले भी है, ठीक है? या मैं अगर दोबारा आपको Yeah. भेज दूंगा आपको दोबारा, या ताकि आप, आप ये मुझे वाली भेज देना. ठीक है? क्योंकि फिर आपको अपनी आवाज़ ज़्यादा बुरी नहीं लग रही होगी, ठीक है? तो वो आप इसको देख लेना। Yeah. और इसके नोट्स आपने लेकिन कॉपी करने हैं जिस तरह मैंने लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस कॉपी नहीं करने, ठीक है? लेकिन जो नोट्स हैं, जो Yeah. बातें जो लिखी हुई हैं, वो आपने सारी कॉपी करनी है। नोट्स अगर आप अच्छे बनाओगी तो आपको रिवीजन में आसानी होगी, आपको याद रखने में आसानी होगी। आपके अपने लिखे हुए नोट्स आपका दिमाग जल्दी रिकॉल करता है एज कम्पेयर टू किसी और के लिखे हुए नोट्स, ठीक है? Yes. अपने Okay. नोट्स को बनाओ और नेक्स्ट क्लास हमारी मैं आपको बताऊंगा कि कब होगी। अच्छा, हमारी क्लासेस, मैं आपको रिक्वेस्ट ही करूंगा कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, ठीक है? मतलब जिस वक्त आपने मुझसे Yes. पूछा उस वक्त भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। मैं आपको इस तरह की रिवीजन क्लासेस जो है वो स्पेशली देता रहूँगा, ताकि आप उनके साथ बराबर आ जाओ, कोप अप कर सको उन तमाम लोगों के साथ जिन लोगों ने पहले से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है? लेकिन आप ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी चल रही हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है? Yeah, yeah, जितना of हो course. आप मुझे टाइम टेबल भेज दें फिजिक्स की सके। क्लासेस का, ताकि मैं अपने केमिस्ट्री और अपने मैथ्स के साथ आपसे कोऑर्डिनेट कर लूँ. ठीक है, मैं आपको वो भेज दूंगा। और कल या जब भी आपकी मदर या फादर जब भी आएंगे सेंटर पे, तो उनको मुझे ये बताना याद से, वो एक बुक लेकर जाएंगे जिसमें इसके टॉपिकल क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंप्लीट, ठीक है? चारों Okay. चैप्टर्स,
तो वो मतलब आपको ज़रूर लेनी है ताकि आप साथ साथ पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर सको उसमें। और मैंने वो क्वेश्चन Yes. कराए हुए थे। हमारी कल शाम को 6:30 से 8, 6:30 till 8 एक रिवीजन क्लास है। ठीक है, वो स्कूल के Okay. स्टूडेंट्स, आपकी आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन कर सकती हो। वो मैं ग्रुप में जिसमें आपको ऐड करूंगा उसमें मैसेज भी करूंगा। ठीक है, So इसी लिंक के ऊपर? नहीं नहीं, लिंक हर दफ़ा अलग होगी और मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, जिस तरह से Yeah, आपको okay, मिली है वो sure. आपने सिर्फ लिंक को क्लिक करना है और आप क्लास में होगी। ठीक है, Okay, yeah. तो वो आपको मिल जाएगी। कल मैं आपको 6:30 से 8 हमारी क्लास है, 6:30 till 8, उसमें हम रिवीजन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट, जो हम जिसका टेस्ट अभी स्कूल में स्टूडेंट्स का है, कुछ स्टूडेंट्स का। तो इसलिए मैंने 2 क्लासेस अच्छा, रिवीजन अच्छा. की हैं, कल भी है और संडे को भी क्लास है। तो कल है 6:30 till 8, आप उसको ज्वाइन करना और नोट ज़रूर बना लेने हैं। ठीक है, और इसको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करें, कुछ देर ब्रेक ले लें जब आपका माइंड फ्रेश हो जाए, एक दफ़ा फिर से इस पूरे लेक्चर को सुनना आप। ठीक है, और अपनी मर्जी से अपने पास जो पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप पास पेपर्स बुक्स होंगी आपके पास? Yeah.